Viewers, good evening. Leader of opposition Rahul Gandhi, who has been leading the vote chori campaign against the government and the election commission, will have to sign the papers. The ecosystem's vote chori narrative has been punctured by the highest court of the land, and the court has wrapped not the election commission but the opposition. Viewers, for days now, Rahul Gandhi has been spearheading his voter adhikar yatra, accusing the election commission of colluding with the BJP to orchestrate what he calls vote chori. In fact, as I speak, Rahul Gandhi is addressing voters in Bihar. He says this is a supposed theft of votes with, he's held press conferences and dramatic PowerPoint presentations to underline his point. He has pointed fingers alleging irregularities in voter lists, duplicate entries, and even large-scale electoral fraud. That's the charge. But the Supreme Court, in a landmark intervention, has now called Rahul Gandhi's bluff. In a move that has punctured the opposition's carefully crafted narrative, the court has not only refused to buy into these baseless claims, but has turned the tables on the opposition itself. Viewers, the court has directed 12 political parties, including Rahul Gandhi's Congress, to submit a status report detailing the steps they have taken to assist voters in ensuring clean and transparent electoral rolls. Think about it, viewers. The court is not questioning the election commission's integrity. It is holding the opposition accountable for their role in the democratic process. What this means is that Rahul Gandhi and his party will now have to submit an affidavit to the court under oath, laying out their contributions to this process. This is the same Rahul Gandhi who has repeatedly dodged the election commission's demands for a sworn affidavit to back his vote chori claims. You would remember CEC Gyanesh Kumar gave him a 7-day ultimatum: provide evidence or apologize to the country. Rahul Gandhi refused to comply, dismissed the demand, and said, "My public statements are my oath." Well, the Supreme Court does not seem to agree here. Viewers, the court's directive is clear: put up or shut up. The deadline for the publication of the final voter list remains September 30th. No extensions, no excuses. Now, this is a body blow to Rahul Gandhi's campaign, which has thrived so far on innuendo and unverified claims. The opposition's narrative, which painted the election commission, or which paints the election commission as a villain, accusing it of colluding with the BJP, has been dismantled now by the Supreme Court. And the court has now shifted the spotlight on opposition's own role. So what's next for Rahul Gandhi? He's at a crossroads. Will he sign the affidavit and provide concrete evidence to back his claims, risking legal consequences if his allegations are proven false? Or will he back down, effectively surrender, and admit that his vote chori narrative was nothing more than a political stunt? Viewers, the Congress party has already cried foul, with many leaders calling the election commission's response laughable and accusing it of blatant partisanship. But viewers, these are desperate cries of a party staring at a humiliating defeat in the court of law and public opinion. The Supreme Court's intervention today is a reminder that our democracy is bigger than any one leader or party. The Election Commission, despite being dragged through the mud, has acted with transparency, uploading lists of 65 lakh deleted voters within 56 hours of the court's directive, complete with reasons for each removal. The process is open, verifiable, and, as the court said, inclusive, with the provision of booth-level agents from all parties working together to ensure accuracy. But do you know what has happened? Rahul Gandhi and his allies have chosen to ignore these efforts, opting instead for a narrative that undermines the very voters they claim to represent. Only 2 objections have been filed so far, viewers, just 2, by booth-level agents of parties, and it's not from the Congress party or the RJD. Viewers, this is a moment of reckoning, or should be a moment of reckoning, for the opposition.
The Supreme Court has not only rejected their baseless narrative, but has demanded accountability from them. The Supreme Court has reminded all of us that those who claim to fight for the people must first be accountable to them. चुनाव आयोग कह रहा है कि कुछ प्रूफ हो तो दो, नहीं दे रहे. इनको प्रूफ कहीं नहीं देने. इनको सिर्फ क्या करना है? इनको सिर्फ आरोप करने. अच्छा, 2 हफ्ते पहले बोल गए कि चुनाव को लेकर के उनके जेब में एटम बम है. कहां गया एटम बम? राहुल गांधी अपनी छवि ऐसी बना करके ले रहे हैं, झूठ के सम्राट माने जाएंगे. People, when we are doing yatra, Rahul ji, and you see you doing yatra, people are complaining to them with solid evidence. We can see that how many voters, genuine voters, has been removed from the voter list. We welcome this intervention by the Honorable Supreme Court, and we are also very pained that it required the intervention of Supreme Court to do something as basic as this. The Election Commission of India was up to something mischievous. Let's open this up. Shazia Ilmi, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Dr. Shyam Kumar, spokesperson of the Rashtriya Janata Dal. Abhinandita Mathur, national spokesperson of the Aam Aadmi Party. Nikhil Jain, political analyst. Haji Randres, political analyst. And Dr. Anand Ranganathan completes this panel. Nikhil, K.C. Venugopal, whose reaction we just played out, is saying that, look, when we are walking on the streets as part of the yatra, people are coming to us complaining. If people are complaining, why are Congress booth level agents not forwarding their complaint to the Election Commission? Pranesh, it's actually quite interesting how the Bharatiya media tries to confuse the public by hiding the truth behind the lies of the BJP. A lot of people in the media today are going around linking this Bihar SIR order with what Rahul Gandhi presented on the 7th of August in his press conference, despite the fact that it has nothing to do with the Bihar SIR. It had to do with the Bangalore Central Lok Sabha constituency in the 2024 elections. You ask me, why are Congress PLAs not acting on the ground? You are embarrassing Rahul Gandhi now. So you are saying there is no problem in Bihar, yet Rahul Gandhi is doing a voter adhikar yatra in Bihar. Are you serious? Have you joined the BJP? Did I ever say that, Pranesh, the most serious problems to democracy in the country right now are manifesting in the state of Bihar? Numerous media reports have pointed that out. Just a few days ago, The Hindu came out with a report that for every 3 men deleted, 5 women were deleted on the grounds that women had permanently migrated, despite the fact that 95% of the migration of women in Bihar is intrastate migration, which is also the most common cause of migration of women in India, post-marriage. Nikhil Jain, one minute. Why are you trying to dodge the simple question? The simple question is, all of you are saying vote chori. Today the court is saying, आप लोगों ने काम चोरी की है. काम चोरी. आपका काम था जाके वहां बोलना to the Election Commission. The booth level agents of the political parties had to go to the Election Commission and say that, look, so and so, Mr. Nikhil Jain, who's a voter of whatever you want to, Begusarai, his name is missing. Nikhil Jain exists, but his name is not there. But you didn't do that. Now you're saying there are no problems in Bihar. Rahul Gandhi was only trying to highlight something that went wrong in Karnataka, but Congress still won. That is vote chori. Think of what you are speaking and then talk. Every media report is showing how so many of the people who've been excluded from the voter lists as being dead or permanently migrated are still living well and fine in Bihar. So many media reports. Every single booth, you have numerous instances of people like that. Lakhs of names have been removed, disenfranchised, because the SIR process is happening in a very shoddy manner, and that is something the Supreme Court acknowledged in the hearings today. The Supreme Court said that the SIR process is not happening properly. The Election Commission is the one not doing their job properly. You read out that read out that observation. Read out this observation. Come on now. Read out this observation. I will read it out. I'll read it out from the... See, Pranesh, that's the point. Now, Nikhil Jain, Google and read it out. I'm giving you time. You are saying the Supreme Court wrapped the Election Commission. Read it out. I will tell you what the court said about political parties. Take time, it's okay. You can, look for it. This is not some, 1 minute. This is not some rapid fire going on. It's okay.
डॉक्टर श्याम कुमार जी, निखिल जैन तब तक वो ढूंढ रहे हैं ऑर्डर जो है ही नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 2 ऑब्जेक्शंस आए हैं सर, और वो कौन से पार्टी से आए? 2 ऑब्जेक्शन आरजेडी से नहीं आए, कांग्रेस पार्टी से नहीं आया वो ऑब्जेक्शन। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो फिर किस बात पे बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है? नहीं प्रनेश जी, इसमें पूरा मसला पूरे जो एसआईआर की प्रोसेस बिहार में जो चल रही है, और इसमें जो 2-3 नैरेटिव पे चली कि बहुत सारे बाहर के लोग हैं, और एक भी आप नहीं खोज पाए, ना मीडिया खोज पाई, ना इलेक्शन कमीशन खोज पाई, ना बीजेपी खोज पाई, ना जनता दल यूनाइटेड तो बहस में ही नहीं है। आपने सुना है कहीं उनका टेक ऑन? तो एक तो बात है क्लियर कर दो, जो आपके सवाल पर मैं आता हूं, आपने जो सवाल पूछा उस पर आता हूं। दूसरी बात, क्या ऑनरेबल कोर्ट ने हम लोग के सभी दावे को खारिज कर दिया है? इट इज नॉट ओवर, ये समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा मत समझिए। डोंट पुट द वन साइडेड स्टोरी। एवरी डे वी आर कमिंग द न्यू काइंड ऑफ द पॉजिटिव जजमेंट इन आवर फेवर बाय ऑनरेबल कोर्ट। अभी सुना ना कि आपने जो है 65 लाख वोटर का नाम डिलीट हुआ है, दैट हैज टू बी अपलोडेड। आप तो बता रहे थे वो हो गया सर, अपलोड 28 जुलाई अपलोड हो गया है श्याम कुमार जी, अपलोड हो गया है, वो तो पहले ही हो गया था। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर श्याम कुमार, कितना आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? राहुल गांधी ने कल शाम को भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी, मोदी इज अ वोट चोर। कोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है, कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन की सारी बातें मान ली और कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्या किया टू असिस्ट द वोटर्स। Can you tell me 5 steps taken by the political party? You talk about your party, RJD, to help the voters. श्याम जी बताइए। नो पॉइंट इज दैट ना, बड़ा सीधी बात है। आप बिल्कुल चीजों को आप जैसे चाहे रखिए, वो आपकी मर्जी है। हम पॉलिटिकल बैटल और लीगल बैटल में दोनों हमारे पक्ष में है। बिहार की वोटर अधिकार रैली हो रही है, ये जनता की रैली है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारी संख्या में जनता, और जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साहब ने जो माहौल बनाया है, मतलब कि लोकतंत्र का जो खत्म किया जा रहा है, उसके पक्ष में आप माहौल बनाते रहिए, आप सबूत मत दीजिए, माहौल बनाइए। अभी आपने बोल दिया कि ये माहौल बना रहे हैं, कोर्ट ने बोला माहौल बनाने से नहीं होगा, दस्तखत करने पड़ेंगे, कागज दिखाना पड़ेगा। श्याम जी, कागज देना पड़ेगा वहां सर। तो जो लोग कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, हम साइन नहीं करेंगे, उनको कागज देना पड़ेगा। निखिल, यू लुक फॉर द पॉइंट दैट आई आस्क्ड यू फॉर, आई विल कम टू यू। लेट्स ब्रिंग इन मिस माथुर। मिस माथुर, what do you make of what the court has said today, that 12 political parties will have to give an affidavit, which means an undertaking where they will have to sign and detail the steps they've taken to help the voters? I hope you remember that the 12 parties also includes the BJP. BJP still is a political party in India, and not a monarchy. Let me say that we really welcome the observations and the directions of the Honorable Supreme Court, especially in having us in the Supreme Court accepting or directing the Election Commission to accept Aadhaar as a proof of ID. This was a big problem, and this is the reason why a lot of people were actually bumped off the election roll, because they were not accepting. The Election Commission was refusing to accept Aadhaar card, as you know. So this is a big victory for the electorate of Bihar, number one. The second point is that I think one can read the directions of the Supreme Court as we like. You obviously have a different narrative. No, you read out. No, 1 minute, ma'am. This is not. No, 1 minute. With you what the court order is not open to interpretation. It is clear. You read it for the viewers. If you think, I am presenting some one-sided view, please, I will indulge you. आप पढ़ के सुना दीजिए। निखिल जैन को अभी भी नहीं मिल रहा है। इट्स बीन 3-4 minutes, 5 minutes. वो ढूंढ रहे, देखिए, कोशिश कर रहे। प्रिंटर इज रेडी बट ही डज नॉट हैव एनीथिंग टू प्रिंट। आप बताइए मिस माथुर। सर, सिंपल बात है, जो आप बोल रहे हैं वो तो इलॉजिकल है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो सब चीजों की हो सकती है, इंक्लूडिंग कोर्ट ऑर्डर्स। ये तो लॉ खुद कहता है।
कि जो भी हम डिसीजन देते हैं उसका इंटरप्रिटेशन लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो आप जो इलॉजिकल बात कर रहे हैं मैं उसको छोड़ देती हूँ एकदम अभी के लिए और आपके सवाल का जवाब देती हूँ। बात यह है that what I'm trying to say is that what the honorable court has said is, and this includes the BJP we still think is one of us, one of the political parties contesting fairly. The Supreme Court is saying simply that the political parties must become part of the process of making these electoral. So if there are objections, they must be filed, and this affidavit and this participation has been sought for of all the parties, not just the opposition. Yeah, but the BJP is not saying, Miss Mathur, is everything okay? The BJP is not saying there is vote chori. The opposition is. So don't make this about BJP. Rahul Gandhi has been spearheading this and, calling the Prime Minister names. Now you're saying that, this, what has happened today is our victory. Now, by that logic, so vote chori has ended. Rahul Gandhi should pack his, bag, end the yatra. What are you celebrating? And I'll tell you what the court has said, ma'am. Let the state electoral officer inform the state political parties about the order and that they need to be present in court and file status reports. Now, there is only one way that this can be read. There's only one takeaway. People who are, profoundly brilliant, only they can take out multiple meanings. I am not one of those. I will ask Dr. Ranganathan to help me and the viewers. But before that, let's get a response from the BJP. Shazia Ilmi, opposition कह रही है कि बीजेपी की हार हो गई आज कोर्ट में. Well, the opposition must know that, the whole agenda of this manufacturing doubt has been called out. And this Rahul Gandhi's shop, or I should say bakery or fakery, has been shut down forever. And I'll tell you why I said that, and it's not open to interpretation. This is what the Supreme Court said, and let me quote them verbatim. What we are surprised to see is that 1.6 lakh BLAs, booth level agents, have so far filed only 2 objections. And you pointed it out, it was neither RJD or Congress. On the other hand, some political parties submitted that BLAs are not being permitted to submit the objections. So all sloganeering here is mere optics. It has been called out. And look at all of them screeching away, screaming away, and talking about how they're not allowed, how 65 lakh voters have been shut out, deleted. But they have nothing to say. Where are these voters? And if they are present there, and all they have to do is get help from their cadres. Are the cadres working against them? I don't know what is happening, but it's a huge number. And this is 65 lakh voters is also a big number. I'm sure you can have 100 affidavits, 15 affidavits. So they've been called out once again. Now, I don't know how this lie will go on and on, because clearly Supreme Court has said something which is not open to interpretation. It is very stark and clear. Supreme Court also mandated the Election Commission should put on record and make it available in public domain the name of the 65 lakh voters. Now, even an Election Commission followed what Supreme Court mandated and indeed put it up on the website. What happened thereafter? Even after it was there for everybody to see, they could not find two instances, also not from RJD or Congress, but so many others. Right. And what is stopping Rahul Gandhi from signing the affidavit? You know what is stopping him? This whole chore business that Nikhil was talking about. On Chaukidar Chor, he had to sign an affidavit and apologize. He knows the Supreme Court only wrapped his knuckles, and what did Supreme Court say? If you're saying that 2,000 square kilometers of Indian land was indeed annexed or taken over by China, where is the evidence? So he knows, and he's running helter-skelter, because he knows very well that he has nothing to show for himself. Even his team, which did this PowerPoint presentation, did such a shoddy job that they were called out the next day. So I think it's pretty embarrassing. Right, it is embarrassing, says the BJP. Dr. Ranganathan, now I have been branded as one illogical person who can't make sense of the Supreme Court order. Ms. Mathur has been very kind in her words. Now, would you throw some light on this, sir, on what the court has said today, what it means?
Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists. With your permission, can I ask the good Miss Mathur a very simple question before? Please, sir. Who am I to stop you? Thank you. No, Miss Mathur said, Pranesh, you are being illogical because law can be interpreted and I am at freedom to interpret it. I ask her a simple question. How else would you interpret a judge's order when he says a person A is hereby convicted of murder? What are the possible interpretations, Miss Mathur, of that order? I don't think that you're making a rational argument, to be honest. I think that is not the point. The point that I'm making simply is this, that the Supreme Court order today, not order, the observations and the directions that were given by the Supreme Court are simply also implicating the BJP to do their, That's not what you said. work. You said it can be interpreted. Now, I am illogical. You are saying Dr. Ranganathan is irrational. So, welcome to the club, Dr. Ranganathan. Nikhil Jain is very happy that, we are in this bracket. We are with him now. Of course, Miss. Make your point. Mathur is quite correct because I interpret the order of a judge proclaiming a man guilty of murder. I interpret as the judge letting him off and saying he's innocent. No, but let's come back to the topic and leave all the irrationality and illogic of political agenda behind. What is the case out here? And I really want to come to my good friend Nikhil because he is the one who's conflated the two issues and now is trying to escape by the window. Please remember that it was he, Rahul Gandhi, and his party that conjoined the Bihar SIR with the so-called expose of Karnataka Bangalore Central. Had the PowerPoint presentation of Karnataka Bangalore Central by Rahul Gandhi not happened, this so-called vote chori yatra in Bihar would not be happening. So you are the one, Nikhil, who has conjoined and conflated both issues. So now you're trying to get out of it by saying those two issues are different. I'm sorry. You can't have it both ways. The fact of the matter is that, first of all, number one, I profoundly disagree with the Supreme Court, and I am very angry today with the BJP government and the Election Commission. How could they accept the Supreme Court saying that even though Aadhaar is no criteria for citizenship, we accept Aadhaar as an ID? It is unacceptable. Is this a banana republic? Why didn't the BJP government or why didn't the government or the representative of the government stand up and say, my lord, on one hand you say it is not a proof for citizenship. On the other hand, you are saying that the deleted voters can actually still say if they are found, give proof as Aadhaar. That is unacceptable, and my good friend Shazia has to explain that anomaly. Number two, it is a fact that 65 lakh voters were deleted. Now, let sense prevail, and I accept the good Mr. Shyam Kumar to accept logic and please accept too. Then lack duplicates. श्याम जी, ये हर साल, हर 2 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है. इसीलिए BLO, BLAs आपके आगे नहीं आते हैं क्योंकि आपका पॉलिटिकल एजेंडा चलता है टीवी डिबेट पर. वो है ग्राउंड पे, उनको पता है रियलिटी क्या है. वरना बताइए, आप यहां पे चिल्ला रहे हैं, आपके खुद साथी ने प्रूफ क्यों नहीं दिया? इज दैट नॉट सिंपल, प्रणेश? आई आस्क. क्यों? मैंने भी यही पूछा था सर. अब शायद ये सेकंड अटेम्प्ट में शायद जवाब दे दें. श्याम कुमार जी बताइए, क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया अगर वहां दिक्कत थी तो? नहीं, आप जो है वन साइड स्टोरी से आगे बढ़िए. मेरा कहना है कि ADR ने भी एक इसमें याचिका दाखिल की है ना, पिटीशन फाइल किया है ना. वो भी पॉलिटिकल पार्टी है क्या? वो भी पिटीशनर है. और ऑनरेबल कोर्ट ने सारी बात को सुनने का काम किया. जहां तक आप बता रहे ग्राउंड का तो काम किया है, लेकिन आप समझने का काम कब करेंगे? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप उसको समझ ही नहीं रहे. मैं आपको एक और चीज बताता हूं. निखिल, आई जस्ट कम टू यू. यस, और हाजी साहब, मैं आपसे भी आ रहा हूं आपके पास. एक और नया रिएक्शन है. कांग्रेस पार्टी है जस्ट पुट आउट अ ट्वीट. Dr. Ranganathan, it is, and Shazia Elmi ji, this is now no more about vote chori. Now they are alleging light chori. वो देखिए क्या बोला है उन्होंने. We will put out the
tweet by the Congress party. In fact, let me read it out to you. It says बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर आपका वोट चोरी कर रहे हैं. वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज संविधान में है, आपके वोट में है. यहां पर इन्होंने लाइट काट दी है. ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन अंधेरे में आवाज बंद नहीं होती, आवाज सुनाई देती है. ये ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. ये सुन लीजिए. आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं. क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है. आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी. देखा आपने? लाइट काट दी. मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है. आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है. और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं. कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे. महाराष्ट्र में चोरी किया. Okay, you heard that. That was Rahul Gandhi explaining how light chori is now going on. So this will be Light Adhikar Yatra or whatever name that the Congress party wants to come up with. Now, Nikhil, is there any logic to this? You tell me. वो बोल रहे हैं लाइट बंद कर दिया. Electricity, you know, it can be here and there sometimes. कभी power on off हो जाता है. You remember when Rahul Gandhi was speaking at a press conference inside a Congress office? वहां उनका माइक बंद हो गया था. वो किसने कर दिया था? First of all, Pranesh, I want your viewers to know that the Supreme Court has not even published the order yet, of which you are somehow verbatim reading. Yeah. They can go on the Supreme Court website. They can check that the latest Nikhil order. Jain, how you are now shifting the goalpost. Now you are in your first response, you were saying the court has said this, the court has said this. I said, please Google what the court has said. Now you are saying the court has not published it. Now, my friend, you are an advocate. 1 minute. You must also, there are websites, if you don't want to go by media reports, but we have a correspondent who sends us updates from the court. Okay, Nikhil, if you can't find something, then accept it. Don't go round and round in circles. Now answer my question. From vote chori to light chori. The Supreme Court that asks the political parties to submit affidavits or apologize to your viewers right now. You very clearly said that the court has asked political parties to submit court has, or take me to court, Nikhil Jain. Take me to court. I am telling you on national television. Take me to court. The court has said today, let the state electoral officer inform the state political parties about the order and that they need to be present in court. And listen to this, file status reports. Should I read it again, Nikhil? If this is not true, take me to court. Okay? So, you could not find the relevant part because that was never there. Now you must message your friends that look, this anchor exposed me again. Let's do something about him. That is what the Congress party has been doing of late. हाजी रंगरेज साहब, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोटर अधिकार में एक दो जगह वो गए हैं, उन्होंने मुस्लिम क्लेरिक से भी मुलाकात की है, वो तस्वीरें हैं हमारे पास. आपको तो डर लग रहा होगा कि ये वोट चोरी तो आपकी कर लेंगे वो. देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा पंडित जी, जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां जितनी भी हैं लगातार ये SIR का जो मुद्दा है इसको उठा रहे हैं और रोडों पर भी जाकर अपनी बात रख रहे हैं. जिस तरीके से प्रक्रिया पूरी हुई है इसमें देखिए कितनी खामियां रही हैं. जो लोग मरे हुए भी नहीं है उनको जो है कागजों में दिखा दिया कि वो तो मर गए. कुछ लोग जो है प्लान करके, जैसे बिहार के लोग दिल्ली में आकर काम करते हैं, उनका वोट काट दिया गया. तो अगर ये मुद्दे अगर सब लोग उठा रहे हैं तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है. और सर्टिफिकेट सेकुलरिज्म का देने के लिए आदर्श पार्टियां जितनी भी हैं वो ना दें, क्योंकि मुसलमानों के जब मुद्दे आते हैं तो कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं वो उनका साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आती कहीं पर भी पंडित जी.
आप बताइए, बुलडोजर पे कौन गया? जमीयत उलमा हिंद गई सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उसको रुकवाया। जो आज मुसलमानों को टारगेट किलिंग की जा रही है, मदरसों को तोड़ा जा रहा, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, तो उन पर कौन बात कर रहा? तो वो भी हम ही बात कर। तो जिस तरीके की राजनीति आज इस देश में हो रही है, जो एक कट्टरता हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू राष्ट्र की राजनीति, मुसलमानों को और दलितों को और आदिवासियों को और ईसाइयों को जो है उनको टारगेट करने की जो राजनीति इस देश में हो रही है, और भाजपा लगातार इन्हीं मुद्दों पे वो जीत रही है चुनाव, तो इसलिए वो इन मुद्दों को बार-बार रणधीर साहब, आप तो अभी आप कांग्रेस के बारे में ये बोल रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि चिट्ठी क्यों लिखी थी कि हमें अलायंस में शामिल कर लो? नहीं तो अगर हम अलायंस में शामिल कर लेते तो हम आज मजबूत विपक्ष में उनके साथ खड़े होते। अरे जब वो मजबूत है ही नहीं तो आप उनके साथ जाना क्यों चाहते हैं? जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने बिट्रे किया है, कुछ किया ही नहीं है मुस्लिम समाज का, तो फिर चिट्ठी लिख के क्यों बोल रहे थे कि हमको ले लो? इसलिए लिखी थी, हमारे समाज के लोगों की भी एक बात है कि हम जितनी भी सेकुलर वोट हैं वो सारी बटे ना आपस में। नहीं तो कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है कि नहीं, ये बता दीजिए हाजी रणधीर साहब। देखिए, मैं तो क्या उनके ऊपर तो मैं क्या कमेंट करूंगा, वो तो आपको पता ही है किस तरीके की राजनीति। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताइए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप बताइए, आप जो बोलेंगे वो मानी जाएगी। नहीं पन्ने जी, आप तो कांग्रेस का नाम भी ले रहे हैं, नहीं तो मीडिया वालों को तो ऐसा कह रखा कि कांग्रेस का नाम ही मत लो, एमआईएम का नाम मत लो, और पार्टियों का नाम न लो, बिल्कुल बीजेपी की माला जपो, बीजेपी की बात करो, बीजेपी के नेताओं के बयान चलाओ, बीजेपी के लोगों के काम। आप उनसे सवाल पूछते ही नहीं पन्ने जी बीजेपी से। अच्छा, आप बताइए, साल में 1-2 करोड़। नहीं, आप पूछ लीजिए शाजिया इल्मी से। आप सर पैनल में है, आप गेस्ट हैं, आप पूछिए। आप मुझे बता दीजिए, मैं पूछ लेता हूं अगर आपसे नहीं हो रहा तो। उस पर बात करिए। आपको लगता है वोट चोरी का जो नैरेटिव है ऑपोजिशन का, जिसमें आप लोग भी हैं, वो पंक्चर हो गया? आज कोर्ट ने पंक्चर कर दिया है। नहीं, देखिए जो कोर्ट कहती है वो हमारे लिए सर्वोपरि होती है, मगर कोर्ट में कई तरीके की, इससे पहले भी कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें भी कही। ये तो 60 लाख लोगों का नाम ही नहीं दे रहे थे, 65 लाख लोगों का। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको नाम दीजिए, उनके बारे में जांच करिए, सारे मीडिया में निकालिए, वहां पर जो जिले के ऑफिस है वहां पर नाम दर्ज करिए, किस वजह से उनका वोट काटा गया। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। तो हम सुप्रीम कोर्ट में, यू विल हैव टू आंसर मिस्टर रंगरेज। डॉक्टर रंगनाथन इज ऑल्सो सेइंग समथिंग। 5 seconds, just 5 seconds. I want to add a data point जो रंगरेज साहब ने कहा। मैं इनकी हाजी हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, और ये हज गए हैं तो कभी झूठ नहीं बोलते, इनको अल्लाह का वास्ता है। इनको क्या पता है कि जो सीमांचल एरिया है बिहार का, इट हैज अ मुस्लिम पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 38 to 68%। वहां पे जो वोटर एक्सक्लूड किए गए हैं वो मेजॉरिटी हिंदू वोटर्स हैं। आपको पता है, ये बार बार कह रहे हैं मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं, मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं। आप बिहार की हिंदू पॉपुलेशन देखिए, जो लोग एक्सक्लूड किए गए हैं वोटर्स, वो हिंदू पॉपुलेशन से ज्यादा परसेंटेज हिंदू है। ये सब बोलना, ये निखिल जैन और कांग्रेस के फैलाए हुए, रंगरेज जी आप मत फड़िए, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप इनके धकोसले में मत आइए। हाजी साहब बताइए, डेटा को डिस्प्रूव करिए। अरे मैं कह रहा हूं, आपको भगवान का वास्ता है, आप बीजेपी के बातों में मत आइए। मैं भी कह रहा हूं आपको भी मैं भगवान का वास्ता दे रहा हूं, भगवान श्री राम का वास्ता दे रहा हूं। ओके, शाजिया इल्मी, यू रेस्पॉन्ड टू द पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिशन। अच्छा, सो इट इज, देखिए कितने साल तक वही आप लोग राग गलापेंगे और ये मातम करेंगे और इस कार्ड को खेलेंगे। कागज नहीं दिखाएंगे, सबूत नहीं बताएंगे, हलफनामा नहीं लिखाएंगे, मतलब कब तक करेंगे आप? अभी भी आपने कितने ढेर सारे झूठ बोले, शायद आप जानते नहीं होंगे, आप हाजी हैं, बाकायदा मक्का शरीफ से होकर आए हैं, जाहिर सी बात है अल्लाह आपको झूठ नहीं बुलवाएगा। लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रोजाना इस पर बातचीत होती है। 65 लाख अगर आपको यकीन है तो उसमें 10 नाम बता दीजिए ना। कौन रोक रहा है? दुनिया की कौन सी ताकत है? अल्लाह तो कहेगा आपसे जाओ और सच बोलो। अल्लाह तो हमेशा सच की ताकत पर यकीन करेगा और उसको बढ़ावा देगा। फिर आपको कौन सी ताकत है जो रोक रही है कहने से और समझने से और करने से? मैं बता देता हूं कौन सी ताकत। वैसे हाजी साहब जवाब दे देंगे। मुझे लगता है ये जो सो कॉल्ड इनके हिसाब से सेक्युलर ताकतें हैं, जैसे कि कहा जाता है, वो ताकतें इनको रोक रही हैं सच बोलने से। हाजी साहब,
नहीं, मैं कह रहा हूं परनेश जी, जिस तरीके से अभी हमारी बहन बोल रही थी, ये साजिया इल्मी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ देश का वासी हूं, मैं देश में यहाँ ही जन्मा हूं, अब मैं अपने डॉक्यूमेंट दिखाऊं इन्हें? ये कौन होते हैं ये लोग हमसे डॉक्यूमेंट? अभी तो आप कह रहे थे कि आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि आधार लोग दिखाएं, अभी आप फिर बोल रहे हैं कि मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊं। हाजी साहब, ये अब पता नहीं मैं क्या बोलूं। आप देखिए, हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं सर, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, बहुत कुछ इलॉजिकल इरेशनल हो चुका ऑलरेडी। वी विल हैव टू, आई विल लेट यू गो। हाजी साहब, thank you for joining us on debate number 1. Viewers, let's shift our attention quickly